अच्छा है क्योंकि एक समय था जब वो विनय कुमार इस टीम के लीडर थे, रॉबिन उत्तपा दिखते थे, स्टुअर्ट विनय दिखते थे आपको, अभिमन्यु मिथुन, और इस टीम का हिस्सा जब वो मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, तरुण नायर, और अब आप इस प्लेइंग लेवल पे नजर डालते हैं ना, एक कवर अप आप मिसिंग है, लेकिन उसके बाद अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों को लगातार खेलते हुए देखते हैं, ज्यादा बदलाव नहीं है। सईद मुश्ताक अली इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करे उसके बावजूद भी। I remember one year in the Shahid Mushtaq Ali, last ball 3 to win, you just get 1 run against Tamil Nadu. Karnataka win by 1 run. Superb shot. Short and wide outside off stump, giving him a chance to free his arms, and that's as good a square cut as you'll see. और ये करना होगा राजस्थान के बल्लेबाजों को ना, तो जैसी मौका मिले ना वो रन्स बनाने होंगे। इस बार पहली बार मुझे लगता है थोड़ा सा बाहर की तरफ वो गेंदबाजी करी थी, थोड़ा शॉट भी था और उसका पूरा फायदा उठाया। उससे पहले वो जितनी भी गेंदबाजी कर रहे थे ना स्टंप के आसपास कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा वाइड गए और उसका पूरा फायदा उठाया। And he knows he's earned. I'm putting my money on this ball being on the good length. Generally very accurate is Kaushik. Back where he belongs in the good length. Back where he belongs in the good length, and a dot ball. 32 for 3 of 9. There you go. 5 times for Tamil Nadu, 4 times for Karnataka. You see the years in between. This is only the Vijay Hazare. The one I was talking about in the Mushtaq Ali, it was the next year. Last ball, 4 to win. Shah Rukh Khan hits a 6 at the Arun Jaitley Stadium. But this is how it's looked in the Vijay Hazare. Look at the dominance over there. And look at those years. 8, 9, 9, 10, 16, 17. They have dominated white ball cricket. Also, they have a very, very good white ball league of their own. They were the first ones to start it, the TNPL and the KPL. That also has had a bearing on these results. बिल्कुल, कि आप ये देखिए कि वो आप खाली एक सिर्फ वो मुश्ताक अली में नहीं जा रही है, विजय हजारे में नहीं जा रहे, उससे पहले आप एक ऐसा टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ पे उतने ही दबाव में आपको खेलना होता है, अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना होता है, मैच प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती है और आपको एक्सपोजर मिलता है फिर। और वहाँ से भी ना आईपीएल की टीम्स बहुत सारी स्काउट्स भेजती हैं देखने के लिए, और वहाँ से भी वो आपके ऊपर रहता है ना कि हाँ अच्छा करेंगे तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आगे जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। सोचिए लेफ्ट हैंड स्पिनर, और आप बात भी कर रहे थे इनके बारे में कि इनके ऊपर भी किस तरीके से मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से शॉट एंड राइड और उसका पूरा फायदा उठाते हुए करण पिछले ओवर में भी बहुत बढ़िया तरीके से शॉट खेला था, और इस बार जैसी मौका मिला ना हाथ खोलने का, शॉट एंड राइड मिला, उसका पूरा फायदा उठाया। He loves it there. It is a strong zone. Bandage shot and wide, a beautiful square cut. The best part about the shot was the picking the gap. There's a bit of traffic over there as you can see, but he's picked the gap to perfection. Easy set and done. जब आप इस प्रकार की शॉट खेलते हैं ना तो देख के जरूर आप थोड़ा सा निराश होते हैं कि 3 विकेट खो दिया आपने पहले 10 ओवर में, और यही बात दिनेश कार्तिक ने भी करी थी कल कि बल्लेबाजी में इतना अच्छा किया नहीं आपने वो चेज करते हुए। और यहाँ पे ना जब वो ड्रेसिंग रूम में बातचीत भी हो रही होगी ना इनिंग्स ब्रेक में कि पहले 10 ओवर जब वो गेंद नए हैं ना वहाँ थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। And all the 3 dismissals, you'll see there wasn't a lot that happened with the ball. It's just maybe the enormity of where you are, the semi-finals of a playoff, chance to get into the final, the pressure of that, the pressure of the runs, 282 on the board. That might have been playing on your mind, but they weren't really jaffers that he couldn't play. There you go. That's a much better line, and that's where he doesn't like it so much because the foot getting stuck over there. Just keep a look on his left leg and how it's stuck, and that's the reason why he loses balance and thrusts forward. Look at that left leg, thinking of coming out, maybe not. And then because his hands are going through, there's too much of momentum from the upper body and he topples over. Look at the balance he loses after playing the ball, the right leg goes in front. It's happened because the lack of stride over there. और यही तो जो लाइन लेंथ है जिसने परेशान किया अभी ये तोमर इस तरीके से आउटवे ड्राइव करते पॉइंट पे। लोगों को भी देखा हमने इस तरीके ड्राइव लगाना चाह रहे थे लेकिन वो गेंद हवा में खेली।
अब बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी गेंदें नहीं थी जिन पे आप आउट हो सकते थे। वो हाँ, शॉट सिलेक्शन कहिए या आपकी पोजिशनिंग कहिए, वो इतनी अच्छी नहीं थी जो आप उन गेंदों को मिस कर गए। और वो जब आप देखते हो करण की तरफ, वही वो अभी भी नॉन स्ट्राइक पे उसी बारे में सोच रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाद छोड़ के खेलें। वो सोचना तब है जब वो गेंद खेलने वाले हैं। नॉन स्ट्राइक पे आप आराम से रहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा विश्राम दीजिए, क्योंकि अगर आपको मुकाबला जीतना है तो आपको बहुत लंबी बल्लेबाजी करनी होगी। And it's a long game. It's a 300 ball game. 10 overs helps, but it's not the be all and end all. Of the stumps, single. 7 from this one. 10 gone. 39 for 3. With NBA League Pass, you get access to every single live game all season long. And when we say every single game, we mean every single game. Giant TV not required, but highly encouraged. Get so much more game with NBA League Pass. Subscribe today. A little fight over there on as well. They both started in the same place. Who will finish on top? That is what it's all about. The start helps, but the finish matters. Anil Chaudhary telling us that this is power play number 2, which means 5 fielders inside the circle, 4 outside, 2 more than you had for the first 10. Nice stride over there. Look at the difference on how Karan is playing and Deepak is playing. Just have a look at the stride, and that's the reason why he doesn't lose balance. Beautiful. Yeah, no run, doesn't matter, but look at that stride. He lets the hand go because just to maintain the shape of the shot. Big responsibility on him. He needs to be there till the end. It's a long game. It is a really long game. A lot of balls to come. Built up. 30 overs, 116 is what Karnataka were. 30 overs, 116 for 4. And they got to 282. We can do the same. Keep the faith. और दीपक हुड्डा के पास एबिलिटी है वो लंबी पारी खेलने के लिए, और किया भी है उन्होंने कई बार। पहले बड़ौदा के लिए देखते थे वो बड़े बड़े रन बनाते हुए, अब वो राजस्थान के लिए। और आज जानते भी है ना थोड़ा सा मुश्किल समय में उनकी टीम है, इसलिए वो शुरू में उस समय लेते हुए वहां पे फास्ट बॉलर्स को जब उनको अच्छे एरियाज में गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो वो इज्जत देते हुए। काबिलियत है जी इनके पास, बिल्कुल काबिलियत है वो एक लंबी पारी खेल के अपनी टीम को मुकाबला जिताने के लिए। A lot of planning required. This is what's happened so far in the game. अभिजीत आउट हुए थे पॉइंट पे, उसके बाद दूसरे ओवर में दूसरे ओपनर को वापस जाना हुआ था। लोगों ने कुछ बढ़िया की 39 गेंदों में 61 रन के नाम। और फिर गेंदबाजी में क्या बढ़िया शुरुआत आई है भाई तेज गेंदबाजों ने कर्नाटक के लिए। And this is what they'll do to you all day. On a pitch like this, they won't blow you away, the Karnataka bowlers. They'll give you nothing. 1 for 13 or 5.4. That's accuracy for you. All the wickets in India, this is meant to be one of the best for batting. Near perfect conditions. The fast bowling attack has been superb. 3.69 is all they've given. 6.2 is what's required. Nowhere on earth you can just pick up a single. That's about it. Two from this one. 11 gone. 41 for 3.
Karnataka winning the toss, electing to bat. 116 for 4 is what they were after 30, but it's these men, Manohar, Bandage, put in the damage right at the end. Anikit was superb, the senior pro, 2 for 43 of 10. Ajay 2 for 43 of 10 as well. Rajasthan in reply, 41 for 3 by Shaq, Kaushik and Bandage, all amongst the wickets. वाइशा कुछ ओवर्स के लिए ना बाहर चले गए थे, इसी वजह से वो गेंदबाजी अभी थोड़ा सा रुकना होगा उनको। जब 2 ओवर डाले थे, 1 विकेट उनके नाम, 5 जगह। और जब हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं इनके बारे में, क्या गेम रहा है जी अभी तक इनके, क्योंकि अगर वो उस समय पे आके इतनी बढ़िया पारी ना खेलते ना, तो इतने रन्स नहीं बनते बोर्ड पे आपके। And Bandage won't mind this, Bisla, because now he's bowling off in the second power play, which means he's got 4 fielders outside the circle. He had to come in and bowl because of a little injury over there. And he was bowling in the first power play, where only 2 are outside the circle. Now 4 outside the circle, so he'll have some cover. He's just been guilty of a little bit short and wide. Couple of square cuts is what he's been hit for. Right now, the point fielder is on the boundary, so he's got cover for that. Very strong unit, this Karnataka, but kudos to Rajasthan, the way they've played this season, undefeated so far. There's another undefeated team waiting for them in the finals. Will it be a clash of 2 undefeated teams in the final? Time will tell. Beautiful shot. Very, very good shot and equally well fielded. Very good cricket all around. वो गैप नहीं मिल रहा है, जिस गैप की तलाश है ना कि वो टाइम करें, वो गैप में जाके 4 रन मिले। और अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से मयंक अग्रवाल के द्वारा। और आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस तरीके से अगर आप बांधे के देखेंगे ना, तो मिडिल ओवर्स में ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के पास हमेशा वो नई गेंद के बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहते हैं। ये लीजिए, वो गैप इस बार ढूंढ लिया जी दीपक हुड्डा ने। पिछली गेंद पे करण की भी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सीधा फील्डर के पास गई थी। लेकिन इस बार दीपक ने मौका दिया ही नहीं फील्डर्स को, बैट के बीचों बीच 4 मिलते हुए। A little bit fuller, rank up volley, foot coming out, and look at him opening the face of the bat just to get the gap. Look at the wrist work right at the end, how he opens it up. Because if he doesn't, he hits it straight to the fielder. Because the mid-off fielder, this will give you a picture. Look at the wrist work over there. How he's opened it up with the wrist exactly to pick the gap. High quality batting for a very good player. और वो फील्ड में बदलाव हो गया, वो शॉर्ट मिड विकेट पे वो खिलाड़ी दिखते हैं। स्लिप के खिलाड़ी को ना शॉर्ट मिड विकेट पे डाल दिया गया, और कोशिश ये रहेगी वो स्टंप्स में करी जाए गेंदबाजी। जैसे वो ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं ना, बल्लेबाज के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि और हमने देखा भी स्क्वायर विकेट कितने सारे रन्स बने। इसलिए मिड विकेट लगा के बातचीत भी यूरोप ने कि आप स्टंप्स के आसपास ही रहिए। Really good from Bandage. This is the length where batters are dragged in front, yet not full enough for the drive or the push. Fast bowler Karnataka, where have they been? Maximum between that 6 meters and 8 meters, 56% of the balls, 45 if it's been a little bit full. जो वाइट डॉट्स है ना वो विकेट है, और उसमें 2 लेफ्ट हैंडर्स दिखते हैं आपको, इसलिए ना वो लाइन चेंज होती हुई दिखती है आपको। ये अच्छा फुटवर्क यहाँ पे बढ़िया तरीके से खेलते हुए बल्ले के बीचों बीच। ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद राजस्थान 46 पे। ये वो जगह है जहां दिग्गज तैयार होते हैं। एक बेहतरीन युवा ड्रिबलर, एक बेहतरीन युवा मिडफील्डर। भविष्य में कौन दिग्गज बन सकता है, आप तय करें। दुनिया की बेहतरीन युवा प्रतिभाएं यहाँ ला लीगा खेलती हैं। फिर कुछ और क्यों देखें, सिर्फ जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर। One hammer, 10 teams. IPL auction 2024, Tuesday, December 19th, live on Geo Cinema.
You won't see hoodie in Rajkot too often. Always good when that's on. What a great venue, though. Superb wicket, great facilities, big ground. One of the best venues in India. We just love it here, don't we? और आप विजय हजारे ट्रॉफी में देखिए ना, जिस तरीके से पिचेस बनाई गई है ना, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है। बहुत ही हाई क्वालिटी पिचेस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजों के हित में, आप गेंदबाज भी देखिए, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, हर किसी के हक में पिचेस। सुचित 36 मुकाबलों में 44 विकेट इनके नाम। इकोनॉमी बहुत बढ़िया जी, 4.1 की। बोल डालो। Miserly, gives you nothing. He's bought that good length, registration done, mutation done. That good length belongs to him. First ball on the money. Little bit wide, but there's a little bit of a misfield, couple of runs for sure. And just talking about the facilities here, 20 practice wickets outside, the indoor, and you could walk into any of those practice wickets and there'll be super pitches. There's no secret here that Saurashtra are the Ranji Trophy champions, are the Vijay Hazare champions as we speak, defending. Syed Mushtaq Ali, they were in the semi-finals last year. This year hasn't been a great year for them. But even now, with the Vijay Hazare semi-final going on, they are the defending champions, aren't they? And they are the defending champions of the Ranji Trophy. So a lot of good happening in the state. A lot of that has to do with the fact of the infrastructure that is provided to them. Short and wide outside off stump. That's a superb shot, and Karan loves it when it's short and wide, doesn't he? He showed us that. और ये शॉट एंड चाहे फास्ट बॉलर्स हो स्पिनर्स हो, ये लगाना पसंद करते हैं। टाइमिंग देखिए कितनी बढ़िया तरीके से वो करते हुए, और गैप देखिए कि डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था लेकिन मौका नहीं था उनके पास। इतनी बढ़िया वो टाइमिंग थी वहां पे, और ये शॉट लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। How early he needs it to hit it past that cover fielder. 52. 50 of the Rajasthan innings, that's where he belongs. And the great thing about that shot was the fact that he met that ball so early so that it goes past Manish Pandey at cover. और जब वो अपने इतना बढ़िया शॉट खेले ना, मुझे लगता है स्पेशली आखिरी गेंद वो सिंगल निकलना चाहिए। पिच इतनी बढ़िया है ना, बल्ले पे इतने बढ़िया तरीके से आती है, जैसी गेंद आगे मिले ना, मिड ऑफ पे एक ले लीजिए आप। बोल डालो कि जितनी ज्यादा डॉट गेंद खेलेंगे उतना दबाव आपके ऊपर आएगा। आखिरी गेंद पे वो सिंगल आता हुआ। सुचित के पहले ओवर में 7 रन आए, 53 पे 3 राजस्थान। Very good from Karnataka. Early blows. Abhijit and Ram leaving without troubling the scorers. Lomaro getting a start, but then instead of one big shot, landing it in the hands of the point fielder. Deepak and Karun now doing the repair work. Krishnappa Gautam, right arm off spin. He's a character. Look at those numbers, phenomenal over 49 games. 26.62, economy under 4.6 is phenomenal. So Vijay Hazare is not an easy gig. It's a tough one, this is. And with the 5 fielders inside the circle these days, between 10 and 40, those numbers are phenomenal. तो नंबर्स इतने अच्छे हैं, तभी तो आप देखते हैं ना कर्नाटक को कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए। चाहे वो बॉल कोई भी हो, लाल बॉल हो, सफेद बॉल हो, ये टीम बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेलती है। कि जब वो खिलाड़ी आपके इतने बड़े तरीके से प्रदर्शन करते हैं ना, तो टीम उसी तरीके से बननी शुरू होती है। जो आप बल्लेबाजों के आंकड़े देखिए, गेंदबाजों के आंकड़े देखिए, बहुत ही बढ़िया रहते हैं। These two batters will also have to plan amongst themselves who they're going to get after. Finish 6.22 and over. You can't really let this go to 8. 6.22, you should be feeling the heat already. You should think about putting a stop at maybe 6.5, maybe 7, and then
try and get 7 every over to re-bowl that one. A hint of turn over here. We saw that yesterday as well under lights. Not much in the morning except from the leg spinner Rahul Chahar. But over here, we saw Nishant Sindhu get a bit of turn. Albeit it goes outside leg stump. And also Krishna Pagotham is pretty tall, so he'll get some bounce as well. Can he go a little bit slower? Right now he's at 93.8 kilometers, a little bit on the quicker side. Sometimes the spinners start off right on the quicker side. Once they really are warmed up, they'll toss up a little bit. That's a reputation, Manish Pandey. You see him and you say no. लाजवाब फील्डर हैं जी ये। जो ग्राउंड कवर करते हैं ना, जबरदस्त। और थोड़ी देर बाद ना आपको फिर वो बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए दिखेंगे, जहाँ सबसे ज्यादा गेंदें आती हैं। गेंद थोड़ा सा बाहर की तरफ जाती हुई। गौतम को जैसे मुझे लगता है आप गेंदबाजी करते देखेंगे ना, फिर आपको गति में परिवर्तन दिखेगा। शुरुआत के पहले ओवर में तो थोड़ा सा तेज गति से डाला है। आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ। 14 ओवर के बाद राजस्थान 58 पे 3। ये चाहिए हमें दिखा रही थी The bowling has been pretty good for Karnataka. Kaushik getting 1 for 14 in 6 overs. Vaishak 2 overs, 8 runs, was out of the field as well. Mandake getting another wicket. 3 wickets falling for Rajasthan. At the moment, it's all about spin here for Karnataka. Coming down the track, lovely shot, lovely footwork as well. Deepak has got a continue for his side. This is an important partnership that's blossoming here for Rajasthan. One stage they were 23 for 3. Now suddenly this partnership has brought them back into the game. The lead of the hour for Rajasthan. Karan Lamba has looked good, getting a start 23 of 32. The thing about this partnership also has been the singles they are working on. They are looking for and churning the strike. So very important. Now you realize you're well set, just repeat the strike, play the gap. So very important. 3 runs here. Another single, just a fumble at short fine. It's time to welcome Chetan Sharma to the com box. Welcome, Paji. थैंक यू अजय। और जो शुरुआत की हम बात कर रहे थे राजस्थान की, 57 डॉट्स, सिंगल्स 19, 7 चौके, जो विकेट्स गवा दी है ना राजस्थान ने, वो एक चिंता का विषय है इस समय। और यही समस्या हमने देखा था जब हरियाणा के खिलाफ तमिलनाडु ने शुरू की थी अपने बल्लेबाजी, और जिस लाइन के साथ गेंदबाजी की, वैसे ही आज अगर कहें तो कर्नाटक के गेंदबाजों ने लाइन पकड़कर गेंदबाजी की है। कोई ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और वहां पर 3 विकेट चटका दिए। Absolutely, and we saw even yesterday that underlies the ball was doing something, and even today. That was the arm ball straight to the fielder. That's another dot delivery to end the over. 15 overs done. Rajasthan 61 for 3. The 2 worms, yes, the yellow worm is just closing on. Earlier, they lost those 3 wickets, those 3 dots. Yellow dot shows not a great start for Rajasthan.
From here, they require 222 runs to win in 35 overs. Karnataka getting to 282 for 8, 23 fours and 9 sixes in the innings so far for Rajasthan. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। दीपक हुडा का खेलना बहुत जरूरी है राजस्थान के नजरिए से। जल्दबाजी की, विकेट भी गवाए और रन कितने बने थे 10 ओवर में? 28 रन। 28 रन अगर बनते, अगर आप कहते ना सिंगल डबल्स पे भी खेलते तभी आप 30 रन बना देते अगर विकेट सबके हाथ में रहे। ये जो गलती की है ना, अगर आप बात करें लमरोर ने बल्ला चलाने की कोशिश की, कोई जरूरत नहीं थी उस समय उनकी। Totally agree with you, Chetan, because see, that's the time when you have to switch a partnership. Even the runs aren't coming, you have to stay there. Even someone like Abhijit, Tomar, Raj, the opening batsman, then you mentioned about Lomror, were in a hurry. They were just trying to play those shots because the bowling was pretty good. There was something happening. They weren't well set. This is the Rajasthan camp there. Were disappointed. Extreme left is Anshu Jain, who played for Rajasthan for a long time. Good opening batter, Anshu Jain. It's a good unit they have, but today is going to be a big challenge for them. Good thing is Deepak, he's held 1.5. He's looking good at the moment. The good thing for Karnataka that Vaishak is back on the field. Oh, uppercut. That's a tough shot. Didn't really get the connection right, but still improvising nicely. ये शॉट देखने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत मुश्किल शॉट है। नीचे गए, लास्ट मिनट तक आंखें बनाई रखी बॉल के ऊपर, ध्यान से देखें और फिर लगा कि मैं अपर कट खेल सकता हूं। बढ़िया शॉट खेल दिया ये वाला। हालांकि गति ज्यादा नहीं थी गेंद में, इसलिए वो उनको बाउंड्री या 6 रन नहीं मिले। एग्जीक्यूशन अच्छा था। ये आप सीखते हैं, कहते हैं ना T20 आप खेलते रहे तो ऐसे शॉट्स आप एक दिवसीय मैचेस में ट्राई करते हैं और ऐसे शॉट्स आप रणजी ट्रॉफी में भी करते हैं। For a fraction of time, just felt he was going to leave that one, and then just seeing the pace wasn't there, then he plays that shot. Just see, as a fraction of a second, Chetan, you just feel that he was going to leave that one. Yeah, at this point of time. क्योंकि आंखें आखिर तक बॉल पर रखी, छोड़ रहे थे, लगा कि बॉल इतनी गति तेज नहीं है और मैं खेल सकता हूं, और खेल दिया। देखिए, तभी कहते हैं ना, लास्ट मिनट तक बॉल को देखते रहे। आप बैटिंग कर रहे हैं, कैचिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप फील्ड पे हैं, बॉल पे आंखें रहेंगी तो यकीनन आप अच्छा करेंगे। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 70 3 विकेट के नुकसान पर, और समय हुआ है ड्रिंक्स का। A left-right opening combination, a wicket-taking spinner, and have we found a new finisher? India's generation next is ready for one last challenge before the World Cup. Watch IDFC First Bank India versus Afghanistan T20 International Series. 3 T20Is start January 11th. Live on Geo Cinema and Sports 18.
राइट लेफ्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन, एक विकेट टेकिंग स्पिनर, और क्या मिल गया है एक नया फिनिशर। डाल दी। वर्ल्ड कप से पहले अपनी आखिरी चुनौती के लिए जनरेशन नेक्स्ट तैयार है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 इंटरनेशनल सीरीज 3 T20 आईज 11 जनवरी से जियो सिनेमा और कलर्स सिनेप्लेक्स पर लाइव। You've heard him comment on the players. Now see him enter the field of play. As a coach, as an umpire, On the buzzer first with Sunbeam Lertara. as a cheerleader. In the Ultimate Sports Quiz 2023. It's not just a quiz, but a clash of India's youngest and brightest minds. The Northeast, home of the beautiful game. The cold puts ice in our veins. The heat in our food puts the fire in our bellies. Our culture gives us flair. History teaches us that we're stronger together. And our people remind us of the united in our name. Northeast United Football Club, stronger together. Watch Indian Super League live on Geo Cinema, Sports 18 and VH1. With NBA League Pass, you get access to every single live game all season long. And when we say every single game, we mean every single game. Giant TV not required, but highly encouraged. Get so much more game with NBA League Pass. Subscribe today. Abhijit Tomar and Ram Chauhan, they walked in. They required those start, but Abhijit Tomar was the first to go. Then Ram Chauhan edging to the keeper. The road followed suit. Then it was really that's catching from which was pretty good. Then runs coming to this partnership. Karan and Deepak looking good, complementing each other. Important partnership that's developing for Rajasthan. At this stage, you see 70 for 3 Rajasthan, still requiring 213 runs to win of 34 overs. Long way to go for them. Vistujans once again, cracking shot in the gap. Nicely played just after the rings break. That's a really good shot. The partnership now 51 of 63. ये खासियत है अगर दीपक हुडा की बात करें, हल्का सा विड्थ मिला नहीं तो टूट के पड़ेंगे। विड्थ मिला, हाथ खोलने का मौका मिला और मालूम है उनको फील्डर वहां मौजूद नहीं है। थोड़ा पुश करेंगे, अगर स्पिनर्स ने इस विकेट पे पुश किया ना तो बहुत पिटाई होगी। यस नो बीच में आ गए हैं। जरूरत नहीं है जब ऐसे रन की, जब अच्छा खासा आपकी पार्टनरशिप चल रही है। The problem was Deepak didn't really know where the ball had gone. It was inside edge, and in the head by that is feeling that pain as well, because Deepak wasn't aware. It was the inside edge going to the short fine fielder. It was Karan who was running all the way. Then he had to come back. He's in. And definitely that injury also diving up at the very last instance. Full stretch dive, exactly what happened. See, Deepak, inside edge, he wasn't aware. He was just looking back, took a start, and then Karan was sent back. He was sent back, and then the full leg dive, also intervening with a throw there. ये तो किस्मत ने साथ दिया कि थ्रो सीधा इन्हीं को लग गया, जबकि ये जानबूझ के बीच में नहीं थे। ये तो अपने जगह पर भाग रहे थे। अगर ये लगता नहीं और मिस करके कहीं चला जाता गेंदबाज के हाथ में, मीलों मील बाहर आउट होते। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर एक रन की वजह से अपनी विकेट गंवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा चल रहा है, अब अच्छी पार्टनरशिप चल रही है दोनों के बीच में। 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो ये सोचना होगा अब कि टिके रहें। अगर टिके रहेंगे तो कोई ना कोई प्रेशर बनेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा अजय अभी तक बॉल पुराना हुआ है ना, रन तभी बने। Absolutely.
As you rightly mentioned, he was just coming back to his path there, Karan. But just mentioning about his partnership, very valuable for Rajasthan. 51 beat of 65 deliveries. The contribution very similar between Karan Lamba and Deepak Huda. They've done well. Remember, both of them came when the team was reeling under pressure. They were 23 for 3, Rajasthan. Then this partnership, a good half century partnership for them. But as far as Karnataka is concerned, Chetan, they have those resources. They have the spin attack as well. Suchit, very experienced. Gautam, we all know what he can do. So the seamers bowling pretty well early on. It just relies, it's a matter of this partnership. अच्छा एक्सपीरियंस है अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर तेज गति से गेंदबाजी करेंगे तो पिटाई होगी, आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ बॉल। अगर आप सुचित की बात करें, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा बिलीव करते हैं छोड़ने के ऊपर, पुश करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। और कृष्णा गौतम की बात करें, हम जानते हैं वो तेज गति से ही गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर धीरे यहाँ पर, और जो मैं बात कर रहा था कि धीमी गति से अगर गेंदबाजी करेंगे तो परेशानी में आएंगे बल्लेबाज। Very rightly said, and we saw that graphic earlier as well. When you're bowling a bit slower, not easy for the batters. They have to really force their way, use their power. Not on there. Leading to the drive, will pick up a single, but bowling a bit slowly as well. Suchit, 6 runs from the over, 76 for 3 Rajasthan. The comparison after 17 overs, Rajasthan 76 for 3, Karnataka 65 for 2. As number of runs are concerned, Rajasthan now higher. They have moved higher. They've lost an added wicket, extra wicket. Rajasthan, Karnataka getting 282 for 8. Remember, Abhinav Manohar and Pandey, they had a very good partnership. Fantastic. And there is clapping. This is good to see. Really pepping up the bowlers as well. Vaishak, he's back on the field. A good thing to have because this lifts the morale of the side. Just moving a shade away on that occasion. Karan. वाइशा की अगर बात करें तो बढ़िया लाइन से गेंदबाजी की है, बीच में गेंदबाजी करते हुए गिर भी गए थे, इस समय लगा कि काफी चोट उनको आई है। शॉर्ट डिलीवरी, नेक्स्ट टाइम के थोड़ा बाहर जाते हुए ये याद दिलवाना जब मैं बैटिंग करता हूँ। अब सच मानिए, मैं जब बल्लेबाजी करता था तो ऐसे लेग स्टंप टू लेग स्टंप मूवमेंट, जरूरत ही नहीं ऑफ स्टंप पे आने की। Well, you had an arc as well, Chetan. I remember seeing you bat a few times. That area, the countryside, the mid-wicket area, got so many runs. Very useful batter as well. Chetan Sharma, along with what he's done with his bowling, but this partnership has been so good for Rajasthan. Just bringing them back into the game. Karan, Deepak, they've enjoyed the time in the middle, played some attractive shots, complementing each other. Fought 55-run unbeaten partnership for the 4th wicket. Again, the spin is still very aggressive. Lovely shots. Free to walk, Deepak Huda bat, improvising at times. That was really kind of a beautiful inning. Looking good, both of them. और जो 3 लास्ट के शॉट्स दीपक हुडा के कमाल के शॉट्स है, एक स्ट्रेट ड्राइव, एक अपर और उसके बाद मतलब वो साफ दर्शाता है। इसलिए मैं उन शॉट्स की बात करना चाहता हूँ कि आंखें देखिए बॉल के ऊपर कैसे जमाई रखी थी दीपक हुडा ने। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो युवा खिलाड़ी इस समय देख रहे हैं ना, उनको ये चीजें नोट करनी बहुत जरूरी है। चौके छक्के तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो चौका या छक्का इसलिए गया है वो इम्पोर्टेंट है। आंखें कहाँ तक टिकाई रखी थी, फुटवर्क कहाँ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हुडा की जो मैं बात कर रहा था, ये शॉट देखिए, आखिर तक उन्होंने फॉलो किया, लास्ट तक बॉल को देखते रहे जब बॉल कहाँ जा रहा है।
ये खासियत है आपकी, अगर आप बॉल को देख रहे हैं लास्ट तक। Absolutely, that's the reason. That's not an easy shot to play. As I say, the ram shot. You have to avoid the ball through and through. Eyes on the ball to the very end. Very rightly said. The thing is that Huda, for me, is going to be the key figure here because Huda there will also help someone like Karan. Definitely help Karan because he's looking good, but he's got to stay there. You see Karan now, the similar delivery and just letting it go, not willing to play that one. इनकी आंखें देखिए कहाँ है, देखिए कहाँ देख रहे हैं, इनकी आंखें बिल्कुल हटा ली इन्होंने आंखें बॉल से। ये दोनों गेंदों, ये दोनों प्लेयरों में फर्क है। वो लास्ट तक देखते रहे और ये शॉट खेला, कड़क शॉट, लेकिन उतने ही बढ़िया फील्डिंग। और ये हम बात जो कर रहे थे ना दीपक हुडा की और करण की, कि किस तरह एक बल्लेबाज लास्ट तक, इवन जब तक फील्डर के पास बॉल पहुंचे तब तक देख रहे हैं, और दूसरे ने